Good afternoon. We'll continue with midship sections. Diagrams we had already done. So theory part we'll do for double hull oil tank. Mics अपना बंद कर लो please. Now the stiffness are on the inner bottom. I have to switch off the mic. Now double hull oil tanker. बेटा mic बंद कर दो. बार-बार mic on कर रहे हो. It's creating a problem now. So this is a longitudinally framed vessel where you have longitudinals all around on the longitudinal bulkhead under the deck, in the DB, and on the sides. The deep transverse web is repeated every 4 frames so that you have a transverse strength. Then these longitudinal stiffeners are your longitudinals, which are welded to the web frames. Stringer plates are provided, which I've shown you yesterday. That is providing you transverse strength and longitudinal strength. So MAPOL 92 was amended that 5,000 and above, the tankers will be double hull. So the grade of steels used are E grade or stringer plate, shear strake, rounded gunwale. And the thickness here is greater than 15 mm. The bill strake, deck strake in way of a longitudinal bulkhead is greater than 25 mm. So this is all grade E steel. Main deck plating, bottom plating, upper strake of longitudinal bulkhead is greater than 40 mm. So the tank spaces have longitudinal framing, and the longitudinal frame, side shell, inner hull, everything you have longitudinals. This is all aligned with the transverse floors and deck transverse. So the deck and bottom longitudinals have the greatest cantling, that means greatest size, because the stiffening, the stresses are most as the distance from neutral axis is maximum. The side shell, upper longitudinal have the least scantlings, and a uniform increase in size occurs when they go down. So as I had explained, the topmost longitudinal are small, and the size increases till they reach the bilge area. That's all your longitudinal framing of oil tankers. Now for product carriers, the deck longitudinals are fitted above the deck to provide flush internal tank surface for cleaning. So those longitudinals are on deck. And another important feature of longitudinal framing is that continuity of strength is maintained. That is at the bulkheads forming the end of the tanks. High tensile steel longitudinals are to be continuous, irrespective of length. And the longitudinals extend from forward collision bulkhead till the aft collision bulkhead without interruptions, without breakage. That is to maintain the longitudinal strength. Now for the floors, the inner bottom longitudinal solid plate floors are fitted. Transverse web plates are stiffened. The stiffeners are there. Transverses which go from port to starboard are built of plate web, and there is a heavier flat face bar. So that is in front of the web plate is the face bar. And the depth is so that they can have the longitudinals passing through it. Now for the double hull, you have a solid web and you have horizontal stringers in the double hull. Let's show you where. 18.
So here you have longitudinal stringers here. This is the stringer plates here. This is the stringer plates. Your double hull. In the wing tank, they support the deck longitudinals and 4.5 bulkhead longitudinals. Now you have a bottom centerline girder. I had also made a diagram. I'll just show you. This diagram I had made of a single hull VLCC. See, this is the center tank. You have the wing tanks, and here you have rounded shear strake and the cross type. These are your web plates, the green ones. This is all web plates. This is your girders, and this is your perforated centerline bulkhead. I had made a diagram, but then the labeling I had not done. So here, if you see, you have the double hull, you have the wing tanks and the center tank. The center tank is not more than 18.5, so here it is not perforated. Centerline bulkhead is there. It's not there. It's the DB, the solid plate floor, where you have bottom longitudinals, inner bottom longitudinals. Double hull, you have the stringer plates here, longitudinals inside. And here you have the cross ties here in your wing tanks. And this is the double hull. So this is a VLCC double hull I had made. ये वाला diagram is not available on net. I had made basis VLCC के बाहर आपने double hull and double bottom लगा दिए. Now bottom centerline girder is required in the DB, which has got heavy keel plate. Here your docking loads are transmitted when the vessel is placed on keel blocks. That's why you don't have duck keel in tankers, because you got only one centerline girder, and you can have those pipelines in the tank. Jabki bulk carrier mein you cannot have pipelines in the holds. They'll get damaged. Now the bulkhead spacing throughout the cargo space, cargo tank space is determined by permissible length. MAPCOL requires that length of each cargo tank shall not exceed greater than 10 meters, or a length expressed as percentage of ship's length, which is dependent on number of longitudinal bulkheads fitted, and the minimum distance from ship side to the outer longitudinal bulkhead. Tankers of 2 or more longitudinal bulkheads may have wing and center tanks, length up to 20% of ship's length. Cofferdams, which may be formed by 2 adjacent oil-tight transverse bulkheads, that should be at least 760 mm apart, as required at the ends of cargo space. So the pump room can be accepted in lieu of cofferdam, because it's on aft end of cargo space. And आगे के area में you can have a ballast tank in lieu of cofferdam. A cofferdam will also provided between the accommodation and oil cargo tanks. Now, transverse bulkhead which go from port to starboard or oil tight, you have vertical stiffeners, or you can have corrugated plating. The corrugated plating can be either vertical or horizontal. And then horizontal stringers are supporting the vertical stiffeners and corrugations, and vertical webs support any horizontal corrugation. I'll just show you that diagram. Now this is your vertical corrugation. So the corrugations are vertical. Here the DB tank is there, here your stringer plates are there. So this is vertical corrugation, or vertically corrugated bulkheads in the VLCC. These are horizontally corrugated bulkheads in the VLCC.
Here you have the stringer plates and the longitudinals here, longitudinals down, inner bottom longitudinals, and these are the girders. These are the girders. This is the These are the stiffeners here. So support is provided by vertical centerline bulkhead web. So this is your vertical centerline web here. That is providing support to the corrugations or horizontal corrugation. So that is as a rule deeper on one side of bulkhead than on the other, unless the tank is very long and the web may be symmetrical either side of the bulkhead. So for the longitudinal bulkheads, these are also oil tight. They might be stiffened, can be plain bulkhead or corrugated with corrugation running horizontally, because these are 4.5. Vertical corrugated centerline bulkhead also may be fitted. Conventional stiffening is arranged vertically when side framing is vertically and arranged longitudinally when side framing is longitudinally framed. So this is your longitudinally corrugated bulkheads running 4.5. So if you view from top, these are the longitudinally corrugated bulkheads. Vertical webs are fitted to the longitudinal bulkhead when this is corrugated or longitudinally framed. Corrugated longitudinal bulkheads are only permitted in ships of less than 200 meters, otherwise they are not permitted. So this is the vertical web through which these longitudinals are passing. These are slots for that. So that was your double hull oil tanker. Now we'll start with LPG and then we'll end with LNG. Now LPG is liquefied petroleum gas and is made of propane and butane. So it is used in domestic as well as industrial purpose. So it can be pressurized to a liquid and transported. But then you have to maintain the pressure and temperature conditions so that you don't have a threat to the environment. So at least one of the following has to be applied. That means either you have a fully pressurized gas at ambient normal temperature, maybe 45 maximum. Gas should be fully refrigerated, that is number 2. To the boiling point of that gas, boiling point of LPG can be between -30 to -48. So here you have a fully refrigerated LPG carrier. And the third possibility is either you have a semi-refrigerated with reduced temperature and pressure. You have other gases like ammonia, ethylene, and propylene, which is transported in liquefied form in LPG carriers. You can have ethylene, which can have a lower boiling point like -140. This one has to be carried only in semi or fully refrigerated condition, because here you can't have fully pressurized tanker for ethylene. So this is a fully pressurized LPG carrier. These are small, between 2,000 to 3,000 meter cubes, small tankers. So you can't have big tankers which are fully pressurized. The pressure is pretty high. This is fully refrigerated LPG carriers. Now for the IGC code, the damage limitations to cargo and ship survival in case of collision and grounding is to be carried out. Safety arrangements should be there. Cargo containment and cargo handling procedure should be there. There should be a material of construction for containment and carriage. Then for loading and discharging, requirements are there. FFA requirements are there. Pollution control requirements should be met. You can also use cargo and ships machinery fuel with a provision for thermal expansion and contraction. So for LPG,
The three which we have explained is under pressure with ambient temperature, fully refrigerated at boiling point, semi-refrigerated with reduced temperature and increased pressure. The other important auxiliaries are that it should be well insulated and refrigerated. A compressor room should be there with refrigeration plant. A nitrogen bank should be there as well as IG generator with a dryer system. Here you cannot have a normal IG which you have on tankers. Why? What is the reason why you can't have? You require a IG with dryer system. क्या require? क्यों है ऐसा? Anyone knows that? IG system के साथ ड्रायर की क्या जरूरत है LPG के लिए? नॉर्मल IG जो हम स्क्रपर गैस से यूज करते हैं उसको क्यों नहीं यूज करते? टैंकर में तो यूज करते हैं. इसमें क्या खासियत है? अभी आपके ओरल का क्वेश्चन है सर. हाइड्रेट फॉर्मेशन रोकने के लिए. पानी आने से क्या होगा? हाइड्रेट फॉर्म होंगे सर. वेरी गुड. और उसके बाद एक्सप्लोजन के चांसेस हैं और दूसरा कंटामिनेशन के चांसेस. दैट्स व्हाई इसमें 1% से कम पानी होता है. ऑयस्चर लेवल इज लेस देन 1% और मे बी इन पॉइंट्स ओनली, जबकि नॉर्मल IG में 10% मॉइस्चर होता है. So that's why you have a IG with dryer system. ज्यादातर हम नाइट्रोजन बैंक यूज करते हैं. पर एक ही को पता था और किसी को पता ही नहीं था. क्या तुम गैस कैरियर में क्या सेल कर चुके हो? यस सर. हाँ, इसलिए तुमको पता है. So cargo temperature and but ये ऐसा question everyone can be asked, anyone can be asked. ऐसा नहीं है कि गैस कैरियर में ही सेल किया तो पूछेगा. भाई your certificate is valid for any vessel. So don't think that आपने नहीं सेल किया तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. They can ask you very well. They are not bound to only ask you on container or so. You got to be prepared for all because your certificate is valid for any vessel. कार्गो टेम्परेचर एनवायरमेंटल डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम ये भी होगा इसमें. टैंक एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर डाटा मॉनिटरिंग. देन कार्गो कंटेनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि कार्गो को अगर लीकेज हो तो कैसे कंटेन करें. उसके बेसिस पे आपके टैंक्स को इंटीग्रल टैंक विच इज पार्ट ऑफ द शिप स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट टैंक विच इज नॉट पार्ट ऑफ शिप स्ट्रक्चर, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. तो इंडिपेंडेंट टैंक जो इंटीग्रल टैंक है वो शिप का स्ट्रक्चर का पार्ट, और जो भी आपके स्ट्रेसेस हैं उसमें वो स्ट्रेसेस लगेंगे. सो दे आर मेनली यूज्ड फॉर केसेस व्हेन LPG इज टू कैरिड क्लोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तब आपका टैंक इंटीग्रल होगा लाइक ब्यूटेन, बिकॉज इसमें एक्सपेंशन कंट्रैक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो रिक्वायरमेंट है. इंटीग्रल में वो स्ट्रेसेस नहीं लगेंगे. इंडिपेंडेंट टैंक्स में क्या है, वो अलग से डेक पे रहेगा या इनसाइड अनदर टैंक रहेगा, लेकिन वो सेल्फ सपोर्टिंग होगा बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द शिप स्ट्रक्चर. सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द शिप स्ट्रेंथ. एंड दीज इंडिपेंडेंट टैंक्स को हम डिवाइड करेंगे टाइप ए जो फुली रेफ्रिजरेटेड है, देन आपका टाइप बी एंड टाइप सी. ये सारे फुली प्रेशराइज एंड सेमी प्रेशराइज उनमें डिवाइड हो जाएगा. सो टाइप ए जो है विच इज फुली रेफ्रिजरेटेड, इसमें LPG is at the near atmospheric conditions. मतलब यहाँ कोई प्रेशर कंडीशन नहीं है, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन है. डिजाइन प्रेशर इज लेस देन 700 मिलीबार और ये सबसे बड़े होते हैं LPG कैरियर्स बिटवीन 10,000 to 1 लाख मीटर क्यूब. टैंक्स ये प्रिज्मेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप ए. टॉप्स आर स्लोप सो दैट आपका FSC रिड्यूस हो.
bottom corners are sloped कि इसको pump करने के लिए bilge kind of structure is such that your हाँ जी क्या पूछा कुछ पूछा I'll show you diagram एग्जाम में आप लोग गड़बड़ कर देते हो एंटी फ्लोटेशन चौक नहीं बनाते हो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है वो पीपीटी में वो डायग्राम नहीं दिया है ये मैंने बनाया हुआ है अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये इंडिपेंडेंट प्रिज्मेटिक टाइप ए है एलपीजी का आप लोग बगैर एंटी फ्लोटेशन चौक बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे 4-5 नंबर ये ध्यान रखना पीपीटी में वो डायग्राम नहीं है क्योंकि ये वाला डायग्राम उसमें नहीं था मैं चेंज कर लूंगा बाद में टाइम नहीं मिल रहा ना बहुत नए नए टॉपिक्स हम नए नए सब्जेक्ट्स हमको दे दिए टाइम चेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा अब इसमें पहले एक्सप्लेन कर दो सो दिस इज सेल्फ सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट प्रिज्मेटिक टैंक व्हाई इट इज सेल्फ सपोर्टिंग क्योंकि जहाज का एक स्ट्रक्चर है ये बाहर है हल है उसके अंदर एक और टैंक आ गया तो ये सेल्फ सपोर्टिंग है क्योंकि इसको अलग से डाला गया ये हल गर्डर का पार्ट नहीं है तो इसमें अगर आप देखो ऊपर में टैंक डोम आ गया और ये जो ग्रीन है ये बेसिकली प्राइमरी बैरियर हो गया जो इसका इंसुलेशन बैरियर है बिकॉज ये प्रिज्मेटिक है और ये फुली रेफ्रिजरेटेड है तो इंसुलेशन डालना पड़ेगा और ये सेंटर लाइन बल्कहेड है टू रिड्यूस एफएससी टैंक कनेक्शन ऊपर लगे होते हैं देन दिस इज अ सेकेंडरी बैरियर एंड दिस इज अ वाटर बैलेंस सेकेंडरी बैरियर और ये होल स्पेस है टू कंटेन इन केस ऑफ लीकेज उसको कंटेन करने के लिए अगर यहाँ लीकेज हो जाएगा तो ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर फ्लोट फ्री करेगा और बैंग करेगा तोड़ देगा उसको होल्ड करने के लिए एंटी फ्लोटेशन चॉक यहाँ लगाए जाते हैं ये ब्राउन वाले सो दैट दे होल्ड दिस स्ट्रक्चर यहाँ डक कील है आपका पाइपलाइंस के लिए ठीक है सो आई विल कम बैक टू द पीपीटी क्योंकि ये पीपीटी में ये जो डायग्राम है इसमें एंटी फ्लोटेशन चॉक नहीं बने हैं वो आपको बनाने जरूरी है नहीं तो नंबर कट जाते हैं जस्ट मेक श्योर कि वो बने इसमें नहीं है अब आता है दिस इज योर टाइप ए fully refrigerated. Now the general arrangement of this LPG vessel is same like oil carrier. Cargo tanks are spread over certain length, forward and aft. Machinery space and superstructure is aft. Forecastle is fitted with bow to prevent green seas. Ballast water cannot be carried in cargo tanks. Hence the spaces for ballast are provided by incorporating double hull spaces and bilge and upper wing tanks. The most notable and distinguishing feature of Type A vessel is that it should have a secondary barrier to contain leakage for at least 15 days. And the secondary barrier should be such that the capacity should be able to contain the tank volume at any degree of heel. So the secondary barrier जो है, that is the ship's hull. Primary barrier है, that is the independent tank. That is independent tank inside. In most cases, the tanks are subdivided in the center line by liquid tight bulkhead, which extends to the underside of dome, projecting through the deck, and is used for access and piping. वहां से आपका discharge होता है. अब ये जो anti-roll and anti-flotation chocks उसकी बात कर रहे हैं. Tanks sit on insulated bearing blocks, so the surface accessible for inspection and located by anti-roll and pitch keys, so that the expansion and contraction can take place relative to ship structure. Because ये integral part नहीं है, independent है. तो इसमें जो expansion contraction होगा because of varying temperatures, उसके लिए उसको कहीं बैठना है. Anti-flotation chocks are provided to prevent tank floating off the bearing. The hold was getting flooded. अब ये जो material for construction is notch ductile steel, जो -43 डिग्री तक सही काम करेगा.
तो क्रायोजेनिक स्टील हो जाता है. Boiling point of propane. Transverse bulkhead may be single or double plate cofferdam type between the cargo holes. Insulation can be either on the tank or the secondary barrier on this type of ship. The second kind we are doing is semi-pressurized or semi-refrigerated tanks of LPG. अब इसकी capacity can be from up to 5,000 meter cubes. Independent type C ये है, are generally constructed of ordinary grade of steel. So this one, if you see, this is semi-pressurized LPG. And that is an ordinary grade of steel suitable for temperature of -5 and design pressure of maximum 8 bar. Outer surface of tank is insulated, and then you have a refrigeration or re-liquefaction plant, which is cooling the cargo and maintaining the working pressure. So that's your semi-pressurized LPG. Cargo tanks are often horizontal tanks, which are mounted on saddle support, क्योंकि वो नीचे से rounded है, तो उनको support के लिए saddle support लगेगा. और कई बार ये बाइलोब हो जाते हैं, joint कर जाते हैं to have a better utilization of under deck space and improve payload. ये दिखा रहे हैं आप. तो ये आपके saddle supports हैं. ये दो टैंक को कनेक्ट करके बाइलोब हो जाता. अगर वो सिंगुलर होते तो आपका स्पेस कहीं यूटिलाइज नहीं होता, इसीलिए वो जोड़ दिए गए हैं विद लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड. ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग कार्गोस के लिए. तो दीज आर बाइलोब टैंक्स. अब वी कम टू फुली रेफ्रिजरेटेड. फुली रेफ्रिजरेटेड में यू कैन नॉट हैव बाइलोब, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा. नीचे में सैडल होगा, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनको जोड़ नहीं सकते. इसकी कैपेसिटी यूजुअली लेस देन 2000 मीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन और अनहाइड्रस अमोनिया कैरिड इन 2 to 6 अनइंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर प्रेशर वेसल्स अरेंज बिलो और पार्टली बिलो डेक. अब इनका प्रेशर बहुत हाई है, 17.5 बार, which corresponds to the vapor pressure of propane at 45 degrees Celsius, जो maximum ambient temperature है जिसके ऊपर वेसल ऑपरेट करता है. अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको डेक कूलिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज टैंक फट जाएगा, because it cannot sustain more pressure than 17.5. Tanks are constructed of ordinary grade of steel mounted on cradle ship foundation and fitted below deck. This is with domes protruding through the deck. जहाँ आपके कनेक्शन लगे हैं, अगर tanks are long तो wash bulkhead will be provided. Shape of the tank prevents good utilization of underdeck space, क्योंकि जो rounded areas हैं, आपका स्पेस यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ये सारा स्पेस लॉस हो गया. बाइलोब में जो सेमी रेफ्रिजरेटर जोड़ देते थे तो आपका स्पेस यूटिलाइज हो रहा था. तो एडवांटेजेस ये हैं कि बिल्ड विद ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ स्टील, as cargo is carried at ambient temperature, no insulation required, no re-liquefaction plant required, operation is very simple. Disadvantage है कि under deck space cannot be utilized, high pressure के कारण tank wall thickness is more, तो आपका displacement बढ़ जाता है, कार्गो की क्वांटिटी कम हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है. This is fully pressurized LPG carrier, जो ये डायग्राम फोटो में दिख रहा है. The next carriers of gas carriers is LNG, which is liquefied gas carriers. इसके टेम्परेचर तो बहुत लो हो जाते हैं, -162. और इसमें आपके अलग अलग टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट टैंक्स भी हैं, मेम्ब्रेन टैंक्स भी हैं, कई टाइप के टैंक्स. फीचर अगेन यहाँ है कि पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द कार्गो सिस्टम.
That means only cargo liquid and cargo vapor are present in cargo tank, and flammable atmospheres cannot develop. Gas carriers utilize closed cargo system and loading and discharging with no venting. In LNG, provision is made for vapor return line between tanker and shore. Now, this is complying with the standards of IBC code. Safety features should be inherent with the tank design requirements. तो इसमें आपका टेम्परेचर प्रेशर मॉनिटरिंग होगा, गैस डिटेक्शन होगा, कार्गो टैंक लिक्विड लेवल इंडिकेटर होगा, ये सारा अवेलेबल होगा। और एक टैंकर से दूसरे टैंकर में वेरिएशन हो सकता है। कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम में बी ऑफ इंडिपेंडेंट टैंक टाइप, इज प्रेशराइज्ड, सेमी प्रेशराइज्ड, फुली रेफ्रिजरेटेड, और इसमें हो सकता है मेम्ब्रेन टाइप। इसमें कई टाइप्स के, 2 टाइप के मेम्ब्रेन सिस्टम्स है। तो ये आपका बी टाइप है एलएनजी कैरियर, केवनर मॉस टाइप। ये आप लोगों ने सेकेंड मेट्स में डायग्राम सब बनाया होगा। तो कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम में प्राइमरी बैरियर होगा, सेकेंडरी बैरियर होगा, थर्मल इंसुलेशन होगा, इंटरवेनिंग स्पेस होगा, एडजेसेंट स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए होगा। For cargoes carried in temperature between 10 degrees to -55, tanker hull may act as secondary barrier. The basic tank can be made into independent type A, जो fully refrigerated है, type B, जो अभी आपको फोटो दिखाई थी, केवनर मॉस, और type C, fully pressurized है। Then आपका मेम्ब्रेन टाइप है, जो LNG कैरियर में ही मिलेगा, LPG में नहीं मिलेगा। So independent tanks क्या हैं? They are completely self-supporting. ये हल के पार्ट नहीं है और हल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ नहीं देते। तो आपके दूसरे टाइप के हो गए इंडिपेंडेंट टाइप्स A, B, C। टाइप A जो है फुली रेफ्रिजरेटेड है। Maximum allowable tank design pressure in the vapor space is 0.7 bar. इसका मतलब है आप fully refrigerated condition में carry करोगे। This shows a section through the type of tank required is on fully refrigerated LPG. ये self-supporting prismatic tank है, जिसमें conventional internal stiffening होगा। Just show you the diagram. ये वाला है। तो ये इसमें भी एंटी फ्लोटेशन चौक होगा, और ये वाला पुराना सिस्टम था इसका इंसुलेशन का, बालसा वुड का। जस्ट कम टू दैट, एक बार हम ये करें फिर कराते हैं। टैंक इज सराउंडेड बाय स्किन ऑफ फोम इंसुलेशन। तो इंसुलेशन आपकी फोम की है, जिसमें परलाइट इंसुलेशन यूज होती है। परलाइट बेसिकली एक मटेरियल है जो आपको वॉल्केनिक लावा में मिलता है। It's a very light material, it's an insulating material and is found to fill the whole of hold space. अब ये जो मटेरियल है, it is not crack propagation resistance, क्रैक हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेसेस। तो इसीलिए लीकेज के लिए आपको सेकेंडरी कंटेनमेंट सिस्टम चाहिए, और इसीलिए आपको सेकेंडरी बैरियर चाहिए, क्योंकि यहाँ क्रैक प्रोपोगेशन से लीकेज हो सकती है। ये लिक्विड मीथेन कैरियर है। तो यहाँ अगर आप देखो, वही सेम एज एलपीजी, बट ये थोड़ा प्रोट्रूडेड होता है एलपीजी ऊपर, ये थोड़ा सा दबा हुआ है। इसमें भी एंटी फ्लोटेशन चौक होगा, इसमें भी इंसुलेशन होगा, इसमें भी होल्ड स्पेस होगा, इसमें भी वाटर बैलास्ट होगा। सेकेंडरी बैरियर, प्राइमरी बैरियर में आपका इंसुलेशन अलग टाइप का है। ये वाला बालसा वुड फोम इंसुलेशन टाइप का है। पीवीसी फोम सील बिटवीन द बालसा पैनल्स। बालसा बेसिकली एक वुड है जो इंसुलेट करता है, बहुत हल्का होता है। देन एल्युमिनियम कार्गो टैंक है ये, बाहर में स्टील हल है और ग्लास फाइबर डाला है फॉर इंसुलेशन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत लो चले जाते हैं, -162, तो इसमें इंसुलेशन और जबरदस्त करनी पड़ेगी। फिर यहाँ इनर्टेड भी करते हैं सो दैट कंटेनमेंट ना हो। टिम्बर फरिंग स्ट्रिप होगा, ग्लास फाइबर,
plywood facing balsa panels. The entire thing is like this. This is the insulation system of prismatic tank LNG type A. So the features is for cable of cargo carrying below -10. Secondary barrier must complete barrier. Cable of containing the whole tank. क्योंकि जो whole space है इसमें ये कंटेनमेंट के लिए है कि अगर आपकी लीकेज हो तो एंटायर कार को इसमें कंटेन कर सकता है इस होल स्पेस at any degree of at the defined angle of heel. So by this means appropriate parts of tanker's hull are constructed of special steel, that is cryogenic steel, capable of withstanding low temperature. Alternative is to build a separate secondary barrier around each cargo tank. And again, as per IGC code, secondary barrier should contain the tank leakage for 15 days. So on such tanker, the space between cargo tank, which is the primary barrier, and the secondary barrier, इसको whole space कहते हैं. When the flammable cargoes are being carried, इस space को IG से fill कर देते हैं, so that the flammable atmosphere is not there in case of leakage. पुराने टाइप के जो जहाज थे उनमें ये एल्युमिनियम अलॉय एंड द सेंटर लाइन बल्कहेड में होता था, जहां बालसा वुड सिस्टम यूज किया जाता था. इंसुलेटेड होल्ड कंटेन 3 टैंक्स. बाकी वालों में प्रिज्मेटिक टैंक डिजाइन आ गया नए शिप्स में. Now the next type जो है that is independent type B, which is Kavner Moss. इसका डायग्राम आपको दिखाएं. This is the Kavner Moss. ये वाला है. तो ये पूरा स्फेरिकल टैंक्स होता है जो आपके इन सपोर्ट्स के ऊपर होता है, क्रेडल सपोर्ट्स के ऊपर. This is the diagram. I'll just show you this is the wire frame model इस टाइप का. तो ये क्रेडल के ऊपर ये पूरा टैंक रहता है. पंप आपका यहाँ रहता है, जो पंप सेंटर लाइन से पास पंप करता है ऊपर, और यहाँ आपके मैनिफोल्ड कनेक्शन. So this is your Kavner Moss type B. साइड व्यू से अगर आप देखो, these are the designs here. तो यहाँ आपका कवर हो गया. ये जो है that is your stiffened skirt, transmitting your stress. यहाँ आपकी इंसुलेशन है, और इसमें स्प्रे शील्ड है कि अगर वो लीकेज यहाँ से हो तो ये लीक इसको डायरेक्ट करेगा ड्रिप ट्रे में नीचे, ताकि यहाँ कंटेन हो जाए, और यहाँ कंटेन के बाद यहाँ से पंप किया जाएगा वापस टैंक. डिटेक्टर्स होते हैं कि इन केस लीकेज हो जाए तो यू कैन पंप इट आउट. सो द ड्रिप ट्रेज एंड दीज स्प्रे शील्ड इज फॉर गाइडिंग द स्प्रे और द लीकेज टुवर्ड्स द ड्रिप ट्रे. और ये आपका वाटर बैलेंस टैंक. सो द आउटर डायग्राम दिखा दें. सो टैंक डोम ये है आपका, all penetrations from deck, tank cover of steel, then you have insulation, you've got aluminum tank shell, pipe tower providing access and support for cargo pipelines, then you have aluminum stainless steel joint transitions here, thermal brake or stainless steel here, and this is the stiffened skirt of high tensile steel to transmit the stresses from this dome to the hull of the vessel. And this is the double hull steel hull, और ये क्रेडल बना हुआ नीचे. And this is the water ballast. इसी तरह यहाँ दिया हुआ है. तो एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का बायोमेटालिक जॉइंट यहाँ होता है. That's the insulation. ये पाइप टनल, ये पाइप बनाया हुआ है कॉलम. This is the cargo pump, the drip tray. इसको यहाँ पंप करते हैं.
So type B tanks are constructed of spherical type, and the type of containment system is subject to more detailed stress analysis as per type A system. Or the controls must include investigation of fatigue life and crack propagation analysis. इसमें और ज़्यादा होता है. So this is known as the Kevner-Moss because two persons have designed this independent type B tanks. आपको तो यही डायग्राम बनाना है. मैंने MS Paint पे बनाया हुआ है. Here you have the watertight rubber gas cover, protective steel dome, tank shell aluminum alloy. It's got nitrogen bleed. Under deck space is there. Inner hull is there. The spray shield is there. Drip tray is there. Pipe passage is there. This is the whole space for containment. Drip tray is basically partial secondary barrier. And this is the spray shield. That is the diagram. Yeah, this is a wireframe model. इसमें same parts आपके दिए हुए हैं सारे. The column for pumping. Because of the enhanced design feature, Type B tank requires only a partial secondary barrier in form of drip tray. The whole space in this design is normally filled with dry inert gas. However, when adopting modern practice, it may be filled with dry air, provided that the inerting of space can be achieved if the vapor detection system shows cargo leakage. Then you have a protective steel dome which covers your primary barrier above deck level, and the insulation is applied to the outside of the tank. So ये LNG के Type B spherical tank और कहीं नहीं मिलेंगे. It is salient feature only of LNG carriers. अब इसमें sphere contract करता है and expand करता है, और जो इसके जो compensation है, that is done by the skirt. The skirt is transmitting the stresses from the sphere to the hull of the vessel. The surface of the sphere and part of skirt is covered with polyurethane foam insulation. अब इसमें आपका partial secondary barrier है, which is drip tray under the tank. Flash shields are directing the leakages towards the drip tray. अब as per type B, इनमें sensors हैं for detecting leakage so that you will have timely repairs. But इसमें utilization of cargo space बराबर नहीं है क्योंकि it is spherical. So substantial hull is required to house the large spheres. Above deck, these spheres will have substantial weather covers. So type C we'll do in the next class. Type C and ये वाला type C है. The membrane tanks, gas and technique gas जो है, ये बचा है, and that we'll do in the next class. आज के लिए काफी है. This we'll be doing in the next class. ये सारे आपके types हैं LNG के. So next class में we'll do type C as well as membrane tanks.